Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that answers all your stock-specific queries on this program. Top market experts guide you through your questions on the investment portfolio that you have, the specific stocks that you are feeling stuck with or you are looking out for exiting with some profits there. Ask all these questions on the number that's flashing on your screens. You can also send in along with your name, location and your contact details, as we can also give you an opportunity to speak live to our top market experts and also get a custom made advice for yourself as well. Now you can also log on to our YouTube channel in case you're watching us live there. Then you go to Daily Calls Live and use the comment section there to send me your questions. I'll be happy to pick up those questions and also take it up with our top guests as well. Let me quickly first look at how the markets are trading at halftime. Remember, we had started off on the back foot today. We're still about 100 points lower now and 25,184. So it is looking like that the Monday is panning out with a lot of blues right now. Everything seems to be in a soft, cautious nervousness kind of sentiment that is creeping in. India VIX is the only index that's up in double digit. It was at least in the morning 10% higher. Let me just quickly check that for you right now. Yes, it's still up by about 10 odd percent. So you only have two indices, sectorally that are up. That's the banks, PSUs, private banks, and about to it, some media stocks that are also holding up higher in trade. But all the other sectors, they've slipped, lower in trade today. IT, FMCG, oil and gas, metals, infra, small and mid caps, real estate, pharma, all of these stocks are in fact lower in trade. What about the stocks? On the Nifty, you have Adani Ports as the top mover. You have Bajaj Auto, Interglobe Aviation, Shriram Finance, Bajaj Finance, SBI, Axis Bank. So large part of those banks, NBFCs, private sector and PSU banks that are still holding up in trade. Now let me just quickly welcome our guest on board, Nilesh Jain, Head and Vice President of Technicals and Derivatives Research at Centrum, who's joining in. Hi, welcome to you, Nilesh, and good to have you with us on the program. Well, we started off this new week with some cautiousness, and we are looking at some weakness on the D Street across the board. We've managed to end 3 weeks with gains, but beyond that, again, some more nerves that are getting tested. What's your approach in the markets right now? Very good afternoon to you, Sakshi. Absolutely. So the week has started on a cautious note on the back of, negative global cues that are coming in from the US market specifically. So given this kind of, global development that we are witnessing, we are likely to see this kind of volatility in the market going forward. Now, coming back to the levels, we did see a good momentum all the way from 24,600 to the level of 25,330, and after that we have seen some bit of profit taking today. So today being a first day of profit taking, there could be possibility of some consolidation, and this consolidation is a healthy sign. As long as Nifty trades about 25,050 levels, the undertone remain bullish. Buy and decline should be the strategy. Going forward, we are expecting a gradual upmove to continue towards 25,300 to 25,400. On the lower side, as mentioned, 25,000 to 25,050, that's the important support zone. So ideally, that should be the stop loss for the long position. Now coming to Bank Nifty, it is showing relative outperformance compared to the Nifty index. Not only today, in fact, last few trading sessions, we have seen this kind of outperformance in the Bank Nifty. And that is where we are getting more comfort. We expect Bank Nifty to move towards 57,000 to 57,500. These are the spot levels. And 56,000 is a very strong support, psychological support, as well as on derivative front, we have seen huge amount of put writing. So the setup looks positive for the Bank Nifty as well, and we can expect this momentum to keep going on the upside. Now, this is a kind of volatile market, as mentioned, where the India VIX, the volatility index, where we have seen a huge spike of over 10% today. So the better approach and strategy should be to focus on stocks, focus on sector. Where we are witnessing a good momentum, the focus should be there, and that is likely to continue. Okay, Nilesh, let's actually get started with all our question and answer series now. We have so many of our viewers who are joining in on our YouTube, so welcome to everybody. Many are writing their questions on WhatsApp, so hold on. We will be taking all your questions with Nilesh now. Let's take the first one. This one is from Jay Rami Reddy Guram. Jay says, good afternoon, ma'am. Thank you so much for this show. It's a great show and I get to learn a lot about investments. Please let me know about silver, especially Kotak Gold Silver Passive Fund on Fund.
I'm ready to invest 5 lakh rupees here and I want to know what's your suggestion. Well, first, Jay, you know what exactly you should know is that gold and silver prices have already shot up in an unprecedented manner this year. 61% rally for gold, almost a 70-75% rally for silver in just year to date basis. We've not even finished this year, that is. And if you look at what's really happening in silver ETFs is that they are trading at a premium. Now there's a lot of FOMO driven rally that's taking place. Most of the experts are really saying that investors of fund on funds in gold and silver at the current stage or ETFs are actually paying a hefty premium to what the underlying value of actual silver is at this point in time. So the big question is it wise to pay that premium? Because everywhere you're talking about silver, we are seeing an unprecedented rally. And would you want to pay a hefty premium and enter at a 1.5 lakh rupees or 1.6, 1.7 lakh rupees of a price that you are getting at this point in time? That's the key question. Let's ask Nilesh. What's your view, Nilesh? Well, Sakshi, very well put. See, if you see gold and silver, we have seen a euphoric move in this both precious metal. Specifically, silver has outshined the gold in last couple of months. If you see, in dollar term, it has surpassed 51 mark. The momentum looks strong. If you see last 15-year chart after 2011, this is the first time the silver in the dollar term it has crossed the 50 mark. So it has given a multi-year breakout, but you should remember that the RSI, the momentum indicator, if you see on the weekly chart, has gone beyond 86 level. That's extremely overbought condition if you see in the silver. So in this kind of scenario, it is not advisable to chase the momentum at the high level. Historically, we have seen the history that whenever it reaches 86 or beyond 85 level, the RSI, we tend to see some bit of profit taking, and profit taking is very much due. This has been 7 or 8 consecutive weeks of gain. So not advisable to buy any, in terms of making a fresh investment in the silver as well as gold. The better approach should be to go with a SIP route. SIP should be the better approach, or you should wait for some meaningful decline in both gold and silver. Now coming to upside, although we have upside target of $55 to $58 in the near term, but having said that, better to wait for some meaningful decline, stop loss, or I would say support that is coming somewhere around $46. So the risk and reward is clearly not favorable at current level. So better approach, as I mentioned, the silver ETFs are available, but there are shortages of physical demand. The physical delivery is quite shortage. So because of that, you are witnessing some stoppage in the FOF fund that we have seen in the Kotak as well. So better approach, as mentioned, it should be through ETFs, and better wait for some meaningful decline. Okay, fair point. I hope this has truly helped you out, Jay, in understanding how to go about this entire space. Let's take the next question. This one is from Shomalia Biswas. He's from Kolkata. He says, I have 13 lots, Nilesh sir, of Nifty for 20th October expiry. This is 25,500 call option that I bought at 41. Should I hold it for BTST or not is the key question for next week. See, first of all, if you see the structure as mentioned, there could be possibility of some bit of sideways consolidation, because we have already seen a good spurt in last 2 back-to-back weeks. After such spurt, you usually witness some bit of retracement, and quite possible that retracement may turn out to be a kind of a time decay for your premium. As far as the range is concerned, 25,000 to 25,400, that's the broader range for this week and next week as well. Uh, since you have already bought into this particular call option, I would suggest to keep a stick stop loss in the underlying. That is coming somewhere around 25,100. As long as it holds about 25,100 in the spot level, there could be possibility of some bit of pullback move. So that pullback move may give you a good opportunity to exit on the upside. But since the momentum is lacking, I would suggest, if at all you are making any sort of money on the pullbacks, better to exit. Okay, got that. Better to exit. Let's take the next question. This one is from Satya. He says, hi Sakshi, good afternoon. Can you please find out from Nilesh sir
is it better to switch my current position from NCC to either NITCO or NMDC for the next 12 months? Satya, it would have been really good if you would have shared the levels at which you bought and what's your time horizon as well. That would have really given our guests to give you a better view, an overall view, by understanding what's your current situation is, to really get you that view. But let's try and find out NCC versus maybe NMDC over the next 12 months. Where do you see more benefit? See, first of all, both are from different sector. There is no direct comparison. Now, coming to NCC, as far as technical Yeah. structure is concerned, is looking slightly on a weaker side. A couple of reasons for that. It is constantly facing resistance at its long-term 200-day moving average, and it is also trading well below all short-term and long-term moving averages currently. So, as of now, it's an avoid. If it breaks 220 level decisively on the upside, then there could be potential upside will open up for 240 to 260 on the upside. But if you have already bought into this particular counter, keep a trailing stop loss at 200. That should be a stick stop loss because below 200, it may slide further towards 180 as well. Now, coming to NMDCs, comparatively, this stock is better placed. We continues to remain bullish on metal space as a whole. This particular counter, in fact, has given a good multi-month breakout on the chart. So, given a time horizon of 8 to 12 months, I think this holds better perspective. On the upside, we may see the levels of 85 to 90 going forward, keeping a stop loss below 72. This particular counter can be added in the portfolio. But comparatively, if you ask me to choose any one particular stock out of these two, NMDC would be my preferred bet. Okay, I hope this has also helped you out. Let's take Ankur Modi's question next. Okay, Ankur says, hi Sakshi, good afternoon. Hope you're doing well. I'm very well, Ankur. Thanks for asking, and I hope the same for you. The question that he has is on BLS International. He says the stock has fallen massive today and is now seeing some recovery. So I want to know whether in the short term panic, what should exactly be investor strategy, or is this going to be a stock that is going to be under pressure for some time now? Yes, we did see about 16-17% drop right in the opening of the trading session today. We had marked this stock for all our viewers in the morning show as well. The key reason was that the company has informed exchanges that it has been debarred by the Ministry of External Affairs to participate in any government tenders for next 2 years. There have been some issues because of this. The government has decided to take that step. Although BLS has also said that they are looking at whatever options that they have legally at this point in time to look at what's really taking place. But the stock has recovered. It's now at the day's high, but still 9% lower. Nilesh, how would you advise investors who still have positions in BLS International now? See, first of all, it depends at what price that one has bought into this particular account. And now, given that today's correction with a big gap down, it took a very strong support at 275. That is acting as a strong support zone. Reason being, last year in the month of June as well, we saw a similar kind of sell-off. And prior to that, we saw in the month of March as well, last year 2024, similar kind of sell-off. But both the occasions, the counter took support somewhere around 275. This has been a third instances where the stock is witnessing a sharp rebound from the lower levels. Now, if we see the history, after such pullback, there could be possibility of some bit of selling pressure once again might emerge at the high level. But this pullback may extend towards 320, 330. If you get the levels of 330 to 355 at all, that should be a good exit opportunity for the long position if somebody is already holding. In terms of making a fresh entry, it's a complete avoid. Not advisable to chase or take any contraband at current level. But for those who are already holding the long position, can keep a stop loss below 275 and stay put for a pullback towards 325 to 335. Exit on pullback should be the strategy. Okay, got that. I hope this has also helped you out. Let's take another question. This one is from Raju Tiwari, also our YouTube viewer. Says, can you please advise on Tata Motors? I'm holding this stock since 375 level and I want to know what comes next after having accumulated at 575 as well for a long-term investor. But a good day to ask about Tata Motors, remember, as a consolidated entity with both passenger vehicle and commercial vehicle business, today is the last day when the stock will be reflecting that business to you. Today is also the last day in case you are looking forward to invest in Tata Motors, as a consolidated entity and also be eligible for
the demerger and yet be eligible for the new shares that will be demerged and listed for the commercial vehicles if you want to get free shares for that, because 1:1 is being decided already and tomorrow is the record date. So today is the last day for that. But the good question is, but the good part is that Raju Tiwari has been investing in Tata Motors since a long time, from around 375 odd level. So despite an underperformance in Tata Motors this entire year, the stock has dropped by 10%. In last 1 year, it's dropped by 28%. You're still holding on to profit. So you got a very good price entry at this point. And the good part is you're still thinking of being a long-term investor. Nilesh, how would you advise? See, first of all, as you have mentioned that he's holding since a long time, long-term investor in this particular counter. The stock did see the levels of 1140 as well at the peak that was seen last year, 2024, in the month of July. But if you see last 2 years, it has given a zero return. It is exactly at the same level that was seen in the month of July 2023. So no return, no movement at all in the past 2 years. It is still available at those levels of 666. From a longer term perspective, yes, it's a very good stock to be into. Given the kind of underperformance that we have seen, there could be possibility that this time-wise correction might get over soon, and you may see a gradual recovery going forward. Do not expect any V-shaped recovery, but yes, if you can give another 2 to 3 years in this particular counter, then there are better perspective available, and there are high possibility of stock moving towards 1150 to 1200 as well. But for that, you need to give another 2 to 3 year or 4 year kind of time frame. And at present, we are not advising to buy in terms of making a fresh entry. This advice only for those who are already holding the long position. In terms of making a fresh entry, I would rather wait for a breakout that is placed at 730. On multiple occasions, stock faced resistance at 730. So better strategy would be to buy on breakout, which is placed at 730 level. Then probably we can see a momentum to keep going towards 900 to 950. Okay, got that. I hope truly this has helped you out. Let's take the next question. This one is from Vineet Kulkarni. He wants to know about CE Infosystems, another stock that really went up sharply in trade today. That's Map My India, viewers. And today, right now also it's holding above 6 odd percent higher in trade. Now, the key reason why the stock had really zoomed sharply was also because the counter came into effect after some developments took place in the country. And we have actually seen that the Ministry of Railways has also appreciated the company's navigation system in an ex post as well, and the stock moved up sharply. Your suggestion on CE Infosystems, can it be a stock which can be held on for long term? See, long-term time frame, I think it's very difficult to predict as of now because we have seen a lot of consolidation. In fact, if you see last that was seen in the year 2023, not only that, in the year 2022 as well, the stock was still available at 1800. So effectively, last 3 years, no returns in this particular counter. And I feel this kind of consolidation may continue further. But if somebody is already holding the long position, the good part in this particular counter is that it has a very strong support at 1570 to 1600 zone. So 1570, 1600 is acting as a very strong support. There could be possibility of a follow-up move after today's spurt that we have seen after gap up opening. That counter may move towards 2000 to 2200 on the upside. So from a trading perspective, it's a good bet to initiate long position at current level and on decline, keeping a stop loss below 1600, 2000 to 2200 quite possible. But for next 1 year, I think on the upside, it can move towards 2400 to 2600 as well. But there are multiple hurdles to watch out for. Okay, got that. Let's take a few questions that are actually coming in on our WhatsApp as well. So let's start taking some questions there. We have this one coming in from Ravi Kumar from Noida. Okay, this question is also on BLS International. And, we've addressed this question. I hope, Rajiv, this has answered your question already. In case you have a further top-up question, please do send us your question again. Mohit from Ludhiana says, good afternoon, I want to know about SAIL. I've got 500 shares of Steel Authority at 104. My time horizon is 3 years. Any suggestion on this one, Nilesh? We no doubt bullish on metal space as a whole, but Steel Authority being a PSU stock, we have seen a lot of underperformance. So if you want to bet into the metal space, then I think there are better options available like Jindal Steel and Power, JSW Steel, and within aluminum space you have Hindalco Aluminum, Nalco as well. So you have better options available if you want to play purely in the metal space. As far as Steel Authority is concerned,
given the kind of time frame of 3 year plus, I think yes, we can expect a gradual up move to continue towards 165, 180, or maybe 200 kind of levels can be seen going forward. But what is important is that you have to keep a trailing stop loss as of now, which is coming somewhere around 115. That's a very strong support zone. So keep an eye on that particular level. If it breaks, then you have to review. And going forward, as mentioned, the structure is looking slightly positive, but a gradual up move is something that you can expect towards 150 to 160 from next 1 to 2 years perspective. Okay, thank you so much, Nilesh, for being with us on the program and helping all the viewers out with all their queries as well. Always appreciate your time with us. Thank you so much, and here's wishing you again, great time amidst the festivities, and of course, we'll catch you around Diwali too. Thank you, Sakshi. Thank you for having me on your channel. Thank you. All right, viewers, let's actually now get you to speak to another guest of ours who's now joining in on the show with us. Another favorite on Daily Calls, we have Mr. Pradeep Haldar, the founder and CEO of PhD Capital with us. Warm welcome to you, Pradeep. Good to have you with us on the show. Well, we'll start off with first, your top stock ideas. That's what all our viewers continue to want to find out. It's the time when the Diwali festivities and the spirit is getting into the air. What stocks are you recommending to your clients at this stage for Diwali? Thank you so much again for having me on your show and good afternoon, good noon everyone. And last week मैंने कॉल दिया था अथर एनर्जी, आई होप यू रिमेम्बर. Yes. सो वो उसके बाद जबरदस्त चला. इनफैक्ट एक टॉप बना के आया था ऑलमोस्ट 670 के ऊपर एक टॉप बना के फिर से नीचे आ गया था. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अथर एनर्जी पे फिर से एक बाइंग आ रहा है. तो 1 से 2 हफ्ते का व्यू रहेगा. मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी अभी भी करना चाहिए. अभी 690 के आसपास चल रहा है प्राइस. मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी बाई करना चाहिए और इसका जो टारगेट होगा अभी 700 के ऊपर, मतलब मैक्सिमम इस दिवाली में मुझे लगता है कि अथर एनर्जी 700 अबव 750 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है. अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है. डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड बोथ इज ए वेरी गुड. एंड जिस तरीके से एक पैराबोलिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है एंड आफ्टर ऑल आईपीओ हाई के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है. सो कंटिन्यूअसली हायर टाइम फ्रेम में सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है कि एक बार 750 एंड 700 700 का पहला टारगेट रहेगा, 750 सेकंड टारगेट है. एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके जाइए. स्टॉप लॉस रहेगा 570 के अराउंड मेंटेन करने का सलाह रहेगा और करेंट जोन से भी बाय करने का सलाह रहेगा जी. ओके, गॉट दैट. चलिए, बहुत सारे हमारे दर्शक जो वेट कर रहे थे आपकी कॉल्स की और आपकी स्पेसिफिक आइडियाज़ की, उनको भी एक आइडिया मिल चुका है. और कंग्रेचुलेशंस आपकी बढ़िया कॉल के लिए. जिन इन्वेस्टर्स ने आपकी जो ये इस स्टॉक आइडिया है इसके ऊपर निवेश किया तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा पहुंचा होगा. इससे पहले भी ना मैंने कॉल दिया था एक आशा ही ग्लास का समथिंग, और उससे पहले भी 2 कॉल दिया था मैंने अपडेट, क्योंकि शो थोड़ा कम होता है तो मैं अपडेट दे नहीं पाया. दोनों कॉल भी चला. लास्ट वीक भी जैसे मैंने अथर एनर्जी देके गया था 2 दिन में ही पूरा का पूरा टारगेट अचीव हो गया था. तो अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये फिर से मोमेंटम में आ रहा है जी. ओके, तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप जल्दी जल्दी शोज पर आया करिए और फटाफट से अपने क्वेरीज की जो अपने टिप्स दिए हैं उनके ऊपर भी आप एडवाइस देते रहा करिए. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव नाउ. लॉट ऑफ व्यूअर्स आर जॉइनिंग इन टू आस्क यू द क्वेश्चन, प्रदीप. सो विल टेक सम क्वेश्चंस. अनुज वांट्स टू नो अबाउट विशाल मेगा मार्ट. 78 के रेट पर लिया हुआ है 1 साल तक के लिए. क्या टारगेट हो सकता है इसका? देखिए, विशाल मेगावाट में ना प्रोमोटर स्टेक सेलिंग हुआ था. सम टाइम प्रोमोटर स्टेक सेलिंग कभी खराब नहीं होता, सम टाइम अच्छा भी होता है. सो जब इसका प्रोमोटर स्टेक सेलिंग हुआ था उस दिन का लो था 112 के आसपास 112. तब से जाके अभी नॉन स्टॉप सस्टेन हो रहा है. 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. जिनके पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक है, आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए. 185 190 वन द वे है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 132 से 130 के रेंज पे आपको मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. दिस वन इज फ्रॉम राघव फ्रॉम भोपाल. ये लिखते हैं TCS हैज अंडर परफॉर्म्ड, इट्स डाउन फ्रॉम इट्स हाइज एंड नाउ टाटा ग्रुप गवर्नेंस इश्यूज आर ऑल्सो कमिंग इन टू फोर. व्हाट एग्जैक्टली शुड बी द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अप्रोच? इज इट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और शुड वन स्टे अवे? दैट्स द क्वेश्चन. राघव, फॉर श्योर वील हेल्प यू आउट विद योर क्वेश्चन. तो पहले तो TCS के अर्निंग्स के बाद भी हमने थोड़ा वीकनेस देखा है. इन द रन अप टू दी अर्निंग्स 5-6% चढ़ा था ये शेयर, उसके बाद थोड़ा सॉफ्टनेस आया है. प्रदीप, आप कैसे एडवाइस करेंगे टाटा समूह के ऊपर जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं और उसके चलते एक
वीकनेस या फिर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए कैसे देखेंगे आप ओवरऑल टीसीएस को? ओवरऑल ओवरऑल ग्रुप लास्ट 20 साल से 30 साल से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। अब रतन टाटा जी जाने के बाद ऐसा न्यूज सामने आएगा, किसी का भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके वजह से टीसीएस नीचे नहीं आया। ओवरऑल हम आईटी में देखेंगे तो ओवरऑल टीसीएस का जो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यू यूएस से आता है, बाहर से आता है। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर को अगर हम एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे 30 ऑलमोस्ट 45,000 46,000 के आसपास तो निफ्टी आईटी का टॉप है। अब वहां से निफ्टी आई थी, ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है 30,500 31,000 के आसपास निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पैराबोलिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, बेस भी बन चुका है। अभी के लिए मुझे लगता है कि वैल्यू जोन में टीसीएस है। टीसीएस का मार्केट कैप से मतलब पाकिस्तान का आप देखेंगे जितना जीडीपी है उससे ज्यादा तो टीसीएस का मार्केट कैप है। अब लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट मिला जुला था, इसमें भी मोटा मोटा मैं न्यूट्रली पकड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर 2 to 3 months मैक्सिमम लग सकता है। इसका टारगेट होना चाहिए 3,900 4,000, ऑलमोस्ट 4,000 ऑन द वे है। अभी करेंट जोन से बाई करने का भी सलाह रहेगा। और कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे मैं ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देता, जहां पे वैल्यू ढूंढने का कोशिश करता हूं। तो टीसीएस वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। और मुझे लगता है कि अभी अगर कोई स्टॉक है और कोई सेक्टर है जो मार्केट में बहुत ही जो है वैल्यूएशन नीचे है और जहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो ओनली ऑन एंड ओनली आईटी होना चाहिए। और टीसीएस मेरा फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि आपको 2850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये जो गिरावट अभी आ रहा है इसमें आपको एक्यूमुलेशन करके जाना चाहिए। Okay, got that. Let's take the next question. This one is from Jay Shiv. लिखते हैं, it's a very useful show for us. Thank you, Jay, for writing in such appreciative words. The question is on Aris Infra. 160 के ऊपर लिया हुआ है इन्होंने। अब ये जानना चाह रहे हैं होल्ड करें या सेल करें या एवरेज भी कर सकते हैं अभी। ओके देखिए, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, बेसिकली अगर हम देखेंगे लगातार नीचे आ रहा था, उसके बाद बेस बनाया। बट बेस बनाने के बाद ये अभी ऊपर आएगा, ये इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट द थिंग इज कि जब आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन करेगा कोई भी स्टॉक न्यू लिस्टेड जो भी है, एज पर द माई फिलोसॉफी मुझे लगता है कि वो आईपीओ हाई के ऊपर लेना चाहिए आपको। एंड वो रहेगा 220 इसके ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। फिलहाल तो अभी अवॉइड करना चाहिए। अब जिनके पास है मुझे लगता है कि उनको एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। 145 140 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बाकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी भी अवॉइड करना चाहिए। Let me also take some more questions that are coming in. This one is from one of our viewers again on our YouTube who's joining in. This is Satya Narayan Rao Kulkarni. Wants to know about, can I start a SIP in Tata Capital फॉर 3 to 5 years? आज फ्लैटिश लिस्टिंग हुई है टाटा कैपिटल की और इसके बाद 3 से 5 साल तक का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं और एक सिप स्टार्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में। लार्जेस्ट आईपीओ आया 2025 का, लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ बिकॉज बिल्कुल 1% के प्रीमियम पर ये शेयर लिस्ट हुआ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 330 पर ये, यानी कि लिस्टिंग के आसपास ही है। 326 का आईपीओ प्राइस था। क्या आपने अपने क्लाइंट्स को इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिया है प्रदीप? मैं तो अवॉइड करने के बारे में बताया। इसका पीछे साइकोलॉजी यही है। देखेंगे इसके पहले जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था, कितना जी। ओवर वैल्यूएशन में इन लोगों ने किया था। तो आज तक तो टाटा टेक्नोलॉजी ऊपर आया ही नहीं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि टाटा कैपिटल का वैल्यूएशन इन्होंने ठीक ठाक रखा है, लेकिन मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस ज्यादा है मार्केट क्या सोच रहा है। एक तो लिस्टिंग गेन हुआ नहीं, फ्लैट लिस्टिंग हुआ है। सेकंड थिंग, अभी लिस्टिंग होने के बाद भी देखिए 2-2.5 घंटा हो चुका है, कोई भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा है, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर से ऊपर की साइड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यही सोच रहा है कि अभी तो यहाँ पे पैसा ना लगाएंगे तो ही अच्छा है। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए 1 हफ्ता। आपको हो सकता है हाई पॉसिबिलिटी से 300 के नीचे भी मिले। और न्यू लिस्टिंग हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि मैं एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिलो 300 उसके बाद ही। और आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक एलजी का तो मतलब बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स आया, वहाँ पे तो लिस्टिंग इन होने वाला है। बट एचडीबी फाइनेंस के साथ भी क्या हुआ था, जब लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग होने के बाद उस टाइम पे भी आप देखेंगे कि एक बढ़िया मोमेंटम था, मोमेंटम के बाद फिर से नीचे आ गया। तो ओवरऑल टाटा ग्रुप को लेके जो अभी बात सामने आ रहा है, अब टाटा टेक्नोलॉजी लास्ट टाइम का आईपीओ देख लीजिए, अभी इसमें भी फ्लैट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1-2 हफ्ता वेट करने के बाद, एक बार आपको रिव्यू करने के बाद फिर से सोचना चाहिए। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं, ये भी ले लेते हैं। स्नेहा हैदराबाद से पूछना चाह रही हैं आईआरएफसी के बारे में। रेलवे स्पेस का शेयर है, 80 रुपये के भाव पर खरीदा हुआ है इन्होंने, 2 से 3 साल होल्ड कर सकती हैं। कैसे आप इसको गाइड करेंगे? मुझे लगता है कि उनको होल्ड रखना चाहिए। विकसित भारत का जो 2047 का मोदी जी का थीम है बहुत बढ़िया है। और अभी के लिए एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए। 105 विल बी और स्टॉप लॉस बने रहने का सलाह होगा इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट भावेश हैं सूरत से, लिखते हैं हाउ वुड यू एडवाइज टू बिल्ड अ स्टॉप लॉस और अ ट्रेलिंग एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर अ स्टॉक लाइक आईटीआई दैट इज शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एट दिस पॉइंट इन टाइम सर, वेयर वुड यू प्लेस सपोर्ट लेवल्स ऑन दिस? Actually, it's depend on your when you invest actually. So I at first before I suggest anything, I need to know आपका buying level क्या है. So before बिल्कुल. I don't know the buying level, so how can I advise? This is the first thing. Second thing, when you comment anything, so kindly आपका पुट योर फुल कमेंट, आपका पूरा क्वेश्चन जो है उसको आप अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया होगा. अभी के लिए 334 के आसपास का प्राइस है. मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए 311 के आसपास, क्योंकि 311 से ही 315 दैट इज द बेस लेवल ऑफ द आईटीआई शेयर्स. एंड रिसेंटली हमने देखा था ऑलमोस्ट 360 365 तक ये गया भी था. अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो 311 315 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए. इसका जो नेक्स्ट रैली पॉसिबल होगा आफ्टर 360 के ऊपर ट्रेड करने पर ही. ठीक है, अनीता है लखनऊ से, लिखते हैं आई सॉ वारी renewables has jumped 10%. Is the move sustainable or is it only a reaction to the Q2 results that have come in? Well, definitely today was a knee-jerk reaction for the earnings. Whether this will continue in momentum, we will try to find out. What's your suggestion, Pradeep ji? मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बेसिकली वारी का देखेंगे नेचर ही ऐसा है कि इमीडिएटली रिएक्ट करता है स्टॉक. रिजल्ट का रिएक्शन है. बाकी नेक्स्ट अगर आप मुझसे 6-8 महीने का व्यू मांगेंगे, मैं बोलूंगा स्टॉक 1650 1700 जाने के लिए रेडी हो रहा है. बट आज क्योंकि इतना ऊपर आ चुका है, तो इसीलिए अभी फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं होगा. मुझे लगता है कि अगेन ये जो गैप फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, गैप फिल करने में जा सकता है. 1160 1180 एक बार पॉसिबल है. उस गैप जब फिल करने जाएगा तो बाय ऑन डीप रखना है आपको. बाकी अगर आपके पास है, डेफिनेटली आपको वेट करना है इसको 1600 1700 ऑन द वे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विशेष मणि त्रिपाठी का सवाल है, इन्होंने जूनिपर होटल में खरीदा हुआ है 302 के एवरेज प्राइस पर, रखे रहें या फिर निकल जाएं यहाँ से, ये जानना चाहते हैं प्रदीप जी आपसे. देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी तो फिलहाल निकल जाना चाहिए. एंड क्योंकि ओवरऑल चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब हो चुका है. अभी आप इतने टाइम से वेट हो, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. मैं बोलूंगा मतलब वो लास्ट वाला दिल पे पत्थर रखने वाला सिचुएशन है. आप 240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 240 के साथ आप बने रहिए. लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनेगा. अब इसका प्राइमरी ट्रेंड खराब है, सेकेंडरी ट्रेंड खराब है. आप यहाँ पे जितना इन्वेस्टेड रहोगे टाइम के लिए, उतना ज्यादा लॉस होने का चांसेस रहेगा. तो 240 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए. अगर कभी भी बाउंस बैक मिलता है यहाँ से भी 285 290 तक, हर उछाल में सेल करने का सलाह रहेगा. ऑलराइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वाति हैं जलंधर से, लिखते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रदीप सर एंड आई वांट टू आस्क फ्रॉम हिम ऑन आईओएल केमिकल्स. 112 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ है. कैन आई होल्ड और एवरेज दिस एट करंट लेवल्स? व्हाट वुड यू एडवाइज? एवरेज करने का भी सलाह नहीं रहेगा, लेकिन आप बने रहिए. अभी भी 91.50 एक स्टॉप लॉस हो रहा है, सो उसके साथ आप होल्ड करने का सलाह रहेगा. स्टॉक में अभी रैली तो इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है. मुझे लगता है कि 91 92 के आसपास एक बार बेस बनाने के बाद फिर से ये स्टॉक भागेगा. तो अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा स्टॉक में. ठीक है, हमारे पास एक और सवाल आया है और ये यूट्यूब व्यूअर हैं सक्तनी, और वो लिखते हैं अनंत राज के ऊपर 722 पे बाय किया हुआ है. कैसे आपके यहाँ पर व्यू रहेगा? और एक और स्टॉक है इनका मॉसचिप टेक्नोलॉजीज. दोनों शेयरों पर आपकी व्यू जानना चाहते हैं, अनंत राज और मॉसचिप. देखिए, अनंत राज शॉर्ट टाइम में ऑलरेडी भाग चुका है. अनंत राज को भी मैंने कॉल दिया था एक टाइम पे 600 से, उसके बाद 750 के ऊपर भी गया था. अभी के लिए मुझे लगता है कि करेक्शन पेंडिंग है. इस करेक्शन में एक बार 610 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल है. तो आप देखिए, अगर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो कीजिए, अदरवाइज एक बार नीचे आने का बहुत पोटेंशियल लग रहा है. मॉस्टिप में मैं बहुत ही बुलिश हूँ, क्योंकि सुपर जो सेमीकंडक्टर थीम है, वो सेमीकंडक्टर थीम अभी भी इंडिया में उतना ओके, लेट्स रैली टेक आया द नहीं है. नेक्स्ट. मॉस्टिप पे रिसेंटली मैंने डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कॉल भी मैंने दिया है. तो जी जी, मॉस्टिप मुझे लगता है कि कंटिन्यू 300 के कीजिए. ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है. श्योर, ओके. JWL के ऊपर भी एक सवाल आया है. अगेन रेलवे स्पेस से एक अर्स्टवाइल फेवरेट रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जुपिटर वैगन्स 580 पर खरीदा हुआ है ऋषिकेश ने, और जानना चाहते हैं JWL पर क्या करें और ओवरऑल रेलवे स्पेस में क्या मोमेंटम अभी आने वाला है या नहीं. JWL मुझे लगता है कि 295 का एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप आपका होना चाहिए. बने रहने का सलाह होगा. और ओवरऑल रैली आने के लिए मुझे लगता है कि बजट तक वेट करना चाहिए. यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25% एक बार मूव बजट तक, या तो पोस्ट बजट भी पॉसिबल होगा. लेकिन अभी इमीडिएट लेवल पे तो कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा है. Okay, let me also take the next question. This one is from Nikhil
from UAE. ये लिखते हैं, thanks a lot for Daily Calls show. Thank you so much, Nikhil, for watching our show from UAE. And the question that he has asked is on ITC hotels and says, I want to know, is it the right time to invest in this share or should I wait for some dip? देखिए कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है तो गिरते हुए स्टॉक्स को मुझे लगता है कि बाय नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल इसका बहुत ही बढ़िया है, बट द थिंग इज कि आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 185 से 190 तक। मुझे लगता है कि वन द वे है 190, सो तब जाके आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए, देन बाय करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। Okay, got that. Let me take the next question. We have this one coming in again from one of our WhatsApp viewers. Khushi Singh says, sir, MRPL buy किया हुआ है 158 पर. Please advise what should I do right now? I have 100 shares. मैम आई एम अनएबल टू लिसन यू, आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे पास। Okay, can you hear me now, Pradeep? यस यस, क्लियर क्लियर, यस। Okay, I want to understand from you this question that has come in on MRPL from our viewer Khushi Singh. She has bought this at 158, current price is 142. ओके देखिए, एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 135 के नीचे इसका जो पूरा पैटर्न है खराब हो सकता है। सो 135 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये हमारे पास तिरुपति से आया है, डॉक्टर शिवा साई प्रसाद का। वेलकम मिस्टर साई, सीइंग योर क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, गुड टू हैव यू विद अस। ये कहते हैं कि KPIT इन्होंने खरीदा हुआ है, 105 शेयर्स हैं, एवरेज प्राइस है 1315, होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाएं, यहाँ पर क्या होगी? देखिए डेफिनेटली आईटी में एक रैली अभी आना बाकी है, मुझे लगता है कि सपोर्ट जोन के आसपास है और 1315 के आसपास आपका बाइंग है, अभी 1150 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, अभी तो बेचना नहीं चाहिए। एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस का जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1100 के आसपास है, सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच करना चाहिए उनको, स्ट्रिक्टली बने रहने का सलाह होगा। Okay, got that. Let me take the next question, and this one is from one of our viewers again, who's watching our show on our WhatsApp as well, and this question is come in from okay, we have Zen Technologies के ऊपर question, श्री लक्ष्मी का ये question है, 1530 पर खरीदा हुआ है, आप पूछना चाहते हैं क्या राय होगी आपकी Zen Technologies पर? इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है और बार बार हमने देखा है बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो अभी तो आपने बाई किया है उससे बहुत ही नीचे है, सो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1100 के आसपास और बने रहिए। जब डिफेंस ज़्यादा भागेंगे उस टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ा जेन टेक में भी एक बार पॉसिबिलिटीज बन सकता है। ठीक है, ऑल राइट, आई होप दिस हैज़ ऑल्सो ट्रूली हेल्प्ड यू आउट। प्रदीप जी, आज इतना ही समय है हमारे सभी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और उनके सवाल आंसर करने के लिए, सो शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर ऑलवेज हेल्पिंग आवर व्यूअर्स, कनेक्टिंग with them and solving their questions as well. Thank you so much for being with us. But viewers, it's now time to help you out. Since a lot of you were asking about, I want to know about Tata Capital, what is to be done, I can understand, and that's why we have my colleague Pawan Nahar, who closely tracks all the IPOs to get us an update on what posts the flattish listing that we've got. Unimpressive of 1% premium listing, Pawan, for Tata Capital, and currently trading at 330. There is also no move right after getting listed for the last 2.5 hours as well on the stock. What do you think our brokerage house is saying? For those who have got the allotment, they have definitely not got a big bump up there, but what's the advice? Sakshi, what I see that there is no negative move either. So considering the current market sentiments and today's Correct. market action, so there is no negative move either. So there is no selling pressure. So that somehow hints that all those who have applied for this IPO, they have a vision of long term, and this IPO was considered to be for a long term investment. So that's what the brokerage firms are saying. And 2% move on including both the sides, upside downside, the stock has been range bound post listing in a strict range of 2%. So what the brokerage firms are saying now, so Prashant Tapse, the senior vice president from Mehta Equities, he has suggested that investors should hold this stock for the long term period, and if someone wants to make a fresh entry, any meaningful dips can be considered for the fresh entry, or existing investors can average their cost as well if they want to play this theme of NBFC recovery in India. And Shivani Nyati, head of wealth from Swastika Investmart, she's also she's suggesting that investors may have a partial profit booking
and remaining portion can be held for long term, and those who are holding this stock for a long term period can have a strict stop loss of 300 rupees against the issue price of 326. Interestingly, JM Financial also initiated its coverage on this stock, Tata Capital, today, and they have an ad. They have initiated with an ad rating and a target price of 360, suggesting somewhere around 10-12% upside from the IPO price. They believe that the current valuation leave upside, limited upside compared to HDB Financial Services, which was the another mega IPO of 12,500 crores listed a few weeks back. And but the GM Financial believes that for Tata Capital, the financials will be improving in coming quarters. So yes, and they will review after the couple of quarters, and the review ratings might change over the period. That's all from my side, Sakshi. Thanks a lot, Pawan, then, for giving us all of that update. I hope all our viewers who've been looking at Tata Capital wanting to know what's next, you've got an understanding of how top brokerage houses are really looking at the stock at this point. Pawan, thanks a lot. We'll be getting back with you with LG next and helping all our viewers understand about listing and post-listing moves as well. With that, viewers, we wrap up today's edition of Daily Calls. But stay tuned. There's an action-packed day up for you. At 1 p.m., we have global commodity guru Jim Rogers to talk about gold and silver and the outlook from this festive season as well. Stay tuned for that. From overnight global cues to live Dalal Street moves, we decode what matters for your money today. From stocks to sectors to the top business news.